नमस्कार, मैं हूँ राधिका अग्रवाल, once more in this Facebook Live with Healthworld Doctors. जैसा कि हमें पता चल रहा है, it's really a relieving time for us. Cases थोड़े कम हो रहे हैं, but still now everything hasn't been flushed off. So what actually we are facing is, after COVID, people are facing all the fungal infections. They're scared of it. They don't know what to do, how it is happening, what we have to do. And for this, the guidance, to give the proper guidance and to tell us about everything, today we have with us Dr.Saurabh Singh, the senior pulmonologist who works with Healthworld Hospital, 300-bedded tertiary hospital in Gandhi More City Centre. Sir is MBBS, MD Pulmonary Medicine. He did his European diploma in adult respiratory medicine in France. He is also certified by ECFMG from USA. And before joining Healthworld, he was an ex-senior fellow respiratory medicine in NHS, UK. Welcome, sir. Thank you. So, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि कोविड होने के बाद भी काफ़ी जगहों पे लोग फंगल इन्फेक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं. Maybe it's black fungus, white fungus, or whatever the things are. So, what is actually black fungus? See, actually, this black fungus, it's not something new that we are coming across. It had been there since many decades, but because of the circumstances, as we see in the COVID patients management especially, this black fungus has picked up its role, and you see everywhere in the news, or even the patients come and ask us, what is it and what is that? So definitely we need to understand what exactly it is. So this black fungus disease, or it's also, as you hear, mucormycosis. Previously it's also known as zygomycosis. So everything is same. So basically this is from a genera of fungal species called mucorales, which causes infection in human beings. Though it is very rare to have this disease in humans, because we are every day exposed to these kind of funguses, and it's a great thing to know that since the human immune system is so intact that these diseases do not affect us commonly. That is why it is a rare disease to have, especially when the immune system is compromised, which we are seeing probably because of the steroids or any other immunosuppressant drugs that are being used for the treatment of COVID-19. So then what is the risk factor from developing this disease? So basically understanding this risk factors, first I would like to highlight you what are the causative organisms. So as I mentioned initially, the genera of mucorales, which comprises of mucor, rhizopus, and then Scandinula. So these are one of very few of them which are the notorious to cause this syndrome of the diseases in human beings. And there are a variety of different syndromes that are being affected because of this mucormycosis. Most commonly, the affected ones or the most devastating ones which we are coming across is rhinoorbital cerebral form of mucormycosis, as well as the pulmonary form. There are other many forms of the disease which are also affecting the human beings, but definitely these are the two which are most devastating ones. So coming across the risk factors, as you wanted to know, there are various risk factors for developing this disease, and to be very frank, an intact human immune system prevents from getting such diseases. But to note few of them, like especially diabetes mellitus, if you look at the data literature from 1940s till 2003, all the cases that were reported in the literature were associated with diabetes mellitus only, most of them. But there are other risk factors for such patients who are having immunocompromised status like AIDS, or who are having IV drug abuse, even such patients who are having blood cancer, or even after solid organ transplantations, trauma. These are the various risk factors for these patients to develop this disease. Talking about the diabetes, which was the most common one, it is also very common to see the patients with the diabetes to have acidic form of it, that is ketoacidosis. There are more risk of developing these diseases than the common ones with better immunity system. So then what is the actual relationship between black fungus and COVID-19? Yeah, so as I told you, a human body with an intact immune system is
good enough to take care of this disease, and it will not happen in any healthy individuals. But as you see in the COVID-19 management, high doses of steroids or even long-term use of steroids, along with that some other immunosuppressive drugs like tocilizumab and other forms of drugs which we are using to prevent the cytokine storm, this weakens the immunity system of such patients to an extent that they acquire these infections into them. And especially if their sugars are not controlled, if they are having ketoacidosis, because this organism has an enzyme ketone reductase, which allows this fungus to grow in such acidic environment. So it is more commonly seen in this era where the COVID-19 management is going on, and steroids have been used in heavy forms, these drugs, because there is nothing else practically speaking for the treatment of COVID-19 which has the evidence that it shows or decreases the mortality management of COVID-19. Sir, actually it's really very dangerous. People are scared about. तो हमें कैसे पता चलेगा कि like symptoms क्या है कि हमें पता चले कि या we are suffering from black fungus? Okay, so देखिए तो जैसे ये black fungus आपके बॉडी में एक्वायर होती है, या फिर those patients जो कोविड-19 से ट्रीटमेंट जिनकी होती है, तो केस जब इनको डेवलप होती है, इट कुड बी लाइक ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, इवन आफ्टर वीक्स ऑफ द ट्रीटमेंट दिस डिजीज मैनिफेस्ट. लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्कर्स हैं जिससे हम लोग को सस्पिशन होता है कि इट कुड बी ए म्यूकोरमाइकोसिस और ज़ाइगोमाइकोसिस इन सच पेशेंट्स. सो द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन डिपेंड्स अपॉन where which system has been involved. As I told you, there are various syndromes, and the most two common devastating syndromes are rhino-orbital cerebral form and the pulmonary form. The other forms which also I would like to mention is the GI form. It could be a gastrointestinal mucormycosis. It could be an isolated CNS form or disseminated disease. So the most common symptom a patient can present to you is with fever, which is generalized form, we don't know where it is, but especially in such patients with diabetes mellitus with ketoacidosis, they are prone for acquiring this infection in the rhinocerebral orbital form. Still, the cause is not known that why these patients are susceptible for developing the rhinocerebral orbital form of the disease. But other forms of the disease, as I told you, could be pulmonary. Now the other symptoms, as I told you, apart from fever, if it is involved in the rhinocerebral form, it could be presenting as sudden facial swelling, any black necrotic eschar in the surrounding areas, facial tenderness. Then it could be any ulcerations in the palate or other part, any foul smelling discharges, any black colored discharge. So these are the different manifestations of that form. Even patients with the orbital involvement have diminution of vision, they go blind also. And then it could be proptosis, the eyes try to come out. There could be ophthalmoplegia, that is eyes do not move in the direction because the nerve is affected. It could be facial numbness or swelling. These are the different forms of rhino-orbital cerebral forms of the disease. When it comes to the pulmonary involvement, the most common presentation with the pulmonary involvement is fever and coughing out blood. So these are the various signs of this disease where we get suspicion of further evaluating these patients because we are suspecting now mucormycosis in such patients. Sir, how to diagnose it? See, diagnosis is very important in this disease because आप जितना जल्दी इसको सस्पेक्ट करेंगे तभी आप उसको डायग्नोज कर पाएंगे. और अगर आपने डायग्नोसिस में लेट किया है तो ये इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है. तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको ये सस्पेशन होता है बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स या साइंस और ओवरऑल क्लिनिकल सेटिंग, जैसे पेशेंट्स हाईली डायबिटिक है, कीटोएसिडिक फॉर्म है और ये डेवलप होना शुरू हुआ है उनको कि फेशियल स्वेलिंग हो रही है या फिर आंख की रोशनी जा रही है, फेशियल ब्लैक कलरेशन होने लगा है, तो इन पेशेंट्स को हम लोगों को तुरंत जितना जल्दी हो डायग्नोसिस करना है. द अर्लीस्ट थिंग जो हम लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सस्पिशन, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइनोसेरेब्रल फॉर्म, वी इमीडिएटली गेट ए CT PMS which says, which highlights those sinuses area because these spores once they inhale, जब वो inhale करते हैं तो वो colonize हो जाता है sinuses में first, and then from there
डिपेंडिंग इन द सराउंडिंग एरियाज, वेदर ऑर्बिट हो या ब्रेन हो, वो वहां स्प्रेड करेगा। और अगर उन्होंने अंदर इनहेल कर लिया है लंग्स तक, तो वो पल्मोनरी फॉर्म में आ जाता है। और अगर किसी ने उसको इंजेस्ट कर लिया है तो वो गैस्ट्रो फॉर्म में आ जाएगा। सो वंस यू हैव द सस्पिशन ऑफ दिस डिजीज, डायग्नोसिस इन्वॉल्व अर्ली एंडोस्कोपिक नेजल एंडोस्कोपी, और उन नेक्रोटिक एरियाज को देखना है एंड गेट ए बायोप्सी डन। बिकॉज ये जो फंगस है इसको कल्चर करना इज नॉट इजी। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फील कि कल्चर इनका नेगेटिव आया है। अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जितने भी लैब्स हैं या फिर आउटसाइड लैब्स, मार्केटिंग, एवरीवन इज फोकसिंग कि आप इनका गैलेक्टोमेनिन करा लो या 1,3 बीटा ग्लूटैन ऐसे करा लीजिए, विच जो कि आपको पता लगा के बता सकता है अदर फॉर्म्स ऑफ द फंगस। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस में इन टेस्ट के कोई रोल नहीं। सो एज सुन एज आपने ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया है पेशेंट का, कुछ स्पेसिमेन आपने बाहर निकाला है, उसको तुरंत हमने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखना है, जिसका वेरी क्लासिकल फाइंडिंग यू विल फाइंड इन सच पेशेंट्स। दिस फंगस आर यूजुअली ब्रॉड बेस्ड, राइट एंगल्ड, और इनका सेप्टा नहीं होता। दिस डिफरेंशिएट्स, ये डिफरेंट होते हैं अदर फंगल इन्फेक्शन से, लाइक एस्परजिलस। अगर आप उनका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वो नैरो बेस्ड होते हैं और रेगुलर सेप्टा होता है। तो जैसे आपने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे देखा, योर डायग्नोसिस इज कंफर्म, बट एट द सेम टाइम यस, कल्चर हमें भेजना है इनका। लेकिन अगर कल्चर नेगेटिव भी होती है तो बहुत सारे केसेस में पीसीआर टेस्टिंग ऑफ दिस म्यूकरमाइकोसिस यील्ड्स यू सम बेनिफिट, जहां पे ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने स्पेसिमेन आपने लिया है उसका फंगल स्टेन, स्पेशली विद अ स्पेशलाइज्ड मेथानिन सिल्वर स्टेन या फिर कैंकोफ्लोर, आपको ये स्टेन यूज करते हैं हम लोग पता करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए मेल्टिटॉफ, दैट इज मैट्रिक्स असिस्टेड टेक्निक व्हिच द एग्जामिनर्स डू टू डायग्नोज दिस केसेस। In any way it's really very dangerous. Of course it is. हमें इसे बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर जैसे ये डायग्नोसिस होती है राइट अवे, यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग वेरी एग्रेसिव, not only in the form of diagnosing the disease but also treating the disease. So then what is the treatment of this disease? Approach to the treatment? Yeah. So जैसे आपने देखा कि आप एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये फंगस is ubiquitous, it is everywhere in the environment. तो अगर कल्चर कभी कभी कंटामिनेशन से भी पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर क्लिनिकल सिनेरियो इज नॉट दैट वे, तो डोंट गेट हेस्टी। बट अगर क्लिनिकल सिनेरियो जैसा मैंने कहा, हाई शुगर लेवल्स विद कीटोएसिडोसिस एंड दिस प्रेजेंटेशन, स्पेशली आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रही है या फिर आंखों की रोशनी जा रही है, ब्लैक एरियाज दिख रहे हैं, पैलेट अल्सर्स दिख रहे हैं, तो आपको सस्पिशन रेज हो जाना चाहिए। एंड right from the moment you have suspected this disease, आपको बहुत ही aggressively इसको मैनेज करना है, which involves both surgical involvement as well as the medicine. अब क्या है कि जैसा मैंने कहा कि अगर पेशेंट्स किस लेवल के क्रिटिकली इल हैं, वो डिपेंड करेगा कि हाउ द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग। अब जो मैंने आपको बताया कि साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, सपोज इट इज अ फ्रंटल साइनस जहां पे कोलोनाइजेशन हुई है, वो कुछ दिनों के बाद बाकी साइनसेस में भी भर जाएंगे। और अगर एथमोइडल साइनस ने ये कोलोनाइज किया है तो वहां से वो एक्सटेंड हो गए कि ब्रेन में फ्रंटल लोब में भी पहुंच जाएगा, जहां पे पेशेंट को कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी, पेशेंट विल बिकम फॉरगेटफुलनेस, दे विल बिकम डेलिरियस, देन दैट इज अ वेरी सीवियर फॉर्म इफ इट हैज स्प्रेड टू द ब्रेन। अगर ये इसका स्फेनॉइड साइनस में कोलोनाइजेशन हुआ है तो दैट कैन एक्सटेंड टू द साइनस वीनस, cavernous sinuses, and it can cause thrombosis, it can cause infarction, and it can be disastrous. So जैसे आपने ये सस्पेक्ट किया, आपको तुरंत सर्जिकल डिब्राइमेंट के लिए सोचना शुरू कर देना होगा, एंड एट द सेम टाइम एंटी फंगल थेरेपी हैज टू बी इनिशिएटेड। बहुत ही जल्दी आपको एंटी फंगल शुरू करने पड़ेंगे, बिकॉज जो लिटरेचर हैज जो सामने आए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने सस्पिशन से अगर 6 दिन से डिले किया है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, द आउटकम्स आर पुअर। सो यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, यू कैन नॉट डिले इट। और अगर आपको जैसे मैंने बताया कि आपके सीटीपीएनएस में या सीएनएस में आपको वो एरियाज दिखते हैं, इमीडिएटली वी हैव टू इन्वॉल्व द सर्जिकल डिब्राइमेंट टीम हु विल इवैल्यूएट, एंड वो नेक्रोटिक एरियाज को निकालना है, डिबल्किंग करनी है और एंटी फंगल आपको शुरू कर देनी है।
तो अब जहां तक एंटी फंगल्स की बात है, द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज इज एम्फोटेरेसिन बी लिपिड फॉर्म में, बिकॉज वो कम नेफ्रोटॉक्सिक होता है कंपेयर टू नॉन लिपिड फॉर्म्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, तो आपका किडनी डैमेज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब जिंदगी बचानी है आपको, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, बट यस यू हैव टू कीप द रेनल पैरामीटर्स इन योर माइंड। और अगर एम्फोटेरेसिन बी पॉसिबल नहीं है, देन देयर आर अदर ड्रग्स आल्सो व्हिच कैन बी यूज्ड, which will follow, in further discussion, that if there are other therapies, if you want to know from me. Yeah. So as what Sir said, you need to get aggressive for the treatment. If you're facing any type of the symptoms that you are suffering through this fungal infection, please go consult the doctor and be aggressive for the treatment. So what are the step down therapy in this black fungus treatment? तो जैसे मैंने आपको कहा कि लाइपोसोमल बी लिपिड फॉर्म में जो दवाई है, दिस इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एंड ऑल्सो द इनिशियल थेरेपी। अब अगर हमने किसी पेशेंट को ये दवाई शुरू कर दी है, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग, इट कुड बी सेवरल वीक्स ऑल्सो, जनरली ये हम 5 mg पर केजी से लेकर के 10 mg पर केजी तक पेशेंट के वेट के हिसाब से देते हैं, बट स्पेशली टू बी अवॉइडेड, अगर बहुत ही खराब रिएक्टिव क्लियरेंस है इन पेशेंट्स का, देन वी गो फॉर अदर थेरापीज। But first you ask like step down therapy. So once you have started in patients को liposomal B, amphotericin B, और अगर आपको कुछ साइंस इंप्रूवमेंट के दिखने लगते हैं ओवर द कोर्स ऑफ वीक्स, रेडियोलॉजिकली, क्लिनिकली, तब आप इनको ओरल थेरेपी पे स्विच कर सकते हैं। तो ओरली अभी हमारे पास 2 ड्रग्स ही अवेलेबल हैं, दैट इज पोसाकनाजोल एंड एसारोकनाजोल। सो ये दोनों दवाइयां आप स्टेप डाउन थेरेपी के तौर पे ओरली या सिरप फॉर्म में आप इनको दे सकते हो, स्पेशली पोसाकनाजोल। एसारोकनाजोल का ओरल सिरप नहीं आता, पोसाकनाजोल का आता है, which you can step down and convert to the oral form of the drug, which will continue for further. We don't know the exact duration of the therapy कि कब तक देना है, so everything depends on how much is the improvement clinically, and then you will take a decision whether it has to be stopped or not. So this is a step down therapy. And Yes. what about the other therapies? What we're talking about? See, other therapies, as I told you, अगर किसी पेशेंट्स को आपने स्टेप डाउन थेरेपी एम्फोटेरेसिन बी से लेकर के पोसाकनाजोल या एसारोकनाजोल में लेकर के आए हैं, एंड देन दैट विल कंटिन्यू। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, people also try to sometimes give echinocandins, which has very limited role in the treatment of mucormycosis, because there are other data on the literature which try to make use of any combination therapy of this drug, but practically speaking it doesn't work. Okay. So आपके पास जो options हैं वो liposomal amphotericin B के अलावा पोसाकनाजोल या एसारोकनाजोल ही आपके पास options हैं जहाँ पे आप इन patients को treatment देंगे। Sir, treatment is okay. ये हमें पता नहीं है कि कितने दिन तक चलेगा medications और but the treatment for the black fungus, is that known, like कितना duration लगेगा for the treatment of the black fungus? वही तो मैंने आपसे कहा कि exact duration of the treatment depends कि जब आपने दवाई को शुरू किया है, initial choice of drug that is amphotericin B, उसके बाद आपको पेशेंट्स को क्लिनिकली एज वेल एज रेडियोलॉजिकली इवैल्यूएट करते रहना है कि अगर वो इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। अगर उनमें इंप्रूवमेंट दिख रही है, तब आप उस पेशेंट्स को ओरल पे लेके आएंगे और ओरल थेरेपी भी लंबी चलेगी। और अगर आपको उसके बाद इंप्रूवमेंट दिखती है, एंड देन यू कैन बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि हाँ आप पेशेंट ठीक हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ स्टॉपिंग द थेरेपी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ कितने दिन या कितने वीक्स, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इट इज नॉट ओनली द एंटी फंगल ड्रग जो इन पेशेंट्स को हेल्प करेंगे, आपको सर्जिकल हेल्प चाहिए ही चाहिए। You need to do the debulking in the area जहां पे ये अफेक्ट हुआ है, नेक्रोटिक एरियाज हैं, एस्चार फॉर्मेशन है, आपको ये करना ही पड़ेगा। एंड आई एम रियली सॉरी टू इवन टेल यू अबाउट दैट कि अगर किसी पेशेंट्स को ये म्यूकरमाइकोसिस स्पेशली इन द ऑर्बिटल एरियाज अफेक्ट हुए हैं, तो आपको शायद उस आइज को भी रिमूव करना है, ऑर्बिट की भी सर्जरी करनी है, शोइंग द नेक्रोटिक पार्ट, नेजल सेप्टम को निकाल दिया जाता है, पैलेट को निकाल दिया जाता है। सो इट्स अ वेरी डिसफिगरिंग काइंड ऑफ थिंग जो इन पेशेंट्स को ultimately has to go through it. It's a very painful one. That means the surgery also plays an important very important role. Surgery has a very important role in such patients.
as you see, this patient, this condition is really deadly. So only antifungal therapy is not going to help you. You have to take help of surgical intervention as well. So then what are the outcomes and prognosis of when once it is diagnosed that we are suffering from black fungus? See, frankly speaking, the literature or the data which we have available right in all the medical literatures, if you see, अगर आप देखेंगे तो जो rhino-orbital cerebral form of the disease है, it is somewhat more lesser invasive, और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी को pulmonary mucormycosis हुआ है और किसी को rhino-cerebral orbital mucormycosis हुई है, तो chances of survival in orbital form is lesser, orbital rhino-cerebral form में कम है compared to the pulmonary mucormycosis, because जो डेटा हमारे पास हैं मेडिकल लिटरेचर में, इट सेज कि अगर राइनोसेरेब्रल ऑर्बिटल फॉर्म है तो उसमें मोर्टेलिटी इज समवेयर अराउंड 26 to 60%. But if you talk about the pulmonary mucormycosis, the mortality goes as high as 85%. So it is really something that is something worrisome. Sir, it's about like black fungus के बारे में तो हमें पता चला, but इसके अलावा क्या कोई फंगल डिजीज है जो रिलेट करता है फ्रॉम कोविड-19? देखिए, जैसे आपने सुना होगा, अभी न्यूज में भी आ रहे थे, मेरे से भी बहुत सारे क्वेरीज आए कि सर मैंने सुना है कि ब्लैक फंगस है, इसके अलावा व्हाइट फंगस भी कभी न्यूज में आ जाता है, कभी येलो फंगस भी न्यूज में आ जाता है. सो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सारे फंगल डिजीजेस ऑलरेडी पहले से हमारे कम्युनिटी में, हमारे पेशेंट्स में हैं, बट बिकॉज ये कोविड-19 की वजह से मोस्ट ऑफ देम हैव अंडरगॉन दैट इम्यूनोसप्रेसिव स्टेज, जहां पे ये चीजें सामने आ गई और इतने मैसिव स्केल पे ये चीजें सर्कुलेट हुई हैं कि पीपल आर पैनिक्ड, उनको लगता है कि कोई नई चीज है. नहीं, लेकिन ये चीज आपको जानना चाहिए. अब सपोज आपको मैंने अभी तक ब्लैक फंगस के बारे में बताया, नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हाइट फंगस, इट इज एस्परजिलस इन्फेक्शन. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इन आवर पल्मोनरी प्रैक्टिस हम एस्परजिलस इन्फेक्शन से वेरी कॉमनली वी डील विद. अब जैसे एस्परजिलस इन्फेक्शन अगर आपको इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस में, तो देयर आर जनरली 3 to 4 टाइप्स व्हिच वी सी इन द पल्मोनरी पार्ट. लाइक इट कुड बी simple allergic aspergillosis, chronic aspergillus infection. It could be aspergilloma. It could be invasive aspergillosis, which is the most dangerous form of this disease, aspergillus, especially aspergillus flavus and fumigatus, जो species हैं वो ये बीमारी करती हैं. So ये बीमारियां भी इस टाइम पे सामने आ रही हैं. और जहां तक इनके डायग्नोसिस की बात है, जो मैंने आपसे कहा था 1,3-बीटा ग्लूकैन एंड गैलेक्टोमेनिस पे ये सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं. तो इन पेशेंट्स में भी हाँ ट्रीटमेंट आपको एंटीफंगल्स देना है, लेकिन जहां तक मैंने कहा कि द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ व्हाइट फंगल डिजीज और एस्परजिलोसिस इज इन्वेजिव एस्परजिलोसिस. इन्वेजिव एस्परजिलोसिस मैंने इसलिए कहा बिकॉज ये फंगल इन्फेक्शंस की टेंडेंसी होती है कि ये एंजियो इन्वेजन करते हैं. एंजियो इन्वेजन का मतलब हुआ ये सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को नष्ट करने लगते हैं या खाने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स कैन हैव लाइफ थ्रेटनिंग हेमेटाइटिस और इंट्रापल्मोनरी ब्लीडिंग और पेशेंट्स की डेथ हो जाती है. जहां तक येलो फंगस की बात है, इट इज समथिंग वेरी रेयर. ब्लैक येलो फंगस अभी तक मुझे लगता है 1 या 2 जगह ही रिपोर्ट हुई है, एंड इट इज नॉट फाउंड रूटीनली इन ह्यूमन बीइंग्स. इट इज फाउंड इन रेप्टाइल्स, स्पेशली लिजर्ड. ये भी एक म्यूकर की ही स्पीशीज है, बट यस, अगर आप बहुत ही ज्यादा इम्यूनोसप्रेसिव स्टेज में हैं तो आप ये एक्वायर कर सकते हैं. एंड देयर हैव बीन रिपोर्टेड डेथ्स आल्सो रिलेटेड विद येलो फंगस, व्हिच इज एज आई टोल्ड यू कम्स फ्रॉम द रेप्टाइल्स. और अगर आपने ये बीमारी को एक्वायर की है तो जनरली जीआई सिम्टम, फीवर ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, और इसका भी ट्रीटमेंट सेम एम्फोटेरेसिन बी ही है. सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, एज बिकॉज बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि क्या है ब्लैक फंगस, क्या है वाइट फंगस. सो आई थिंक सर ने सब क्वेरीज सबकी सॉल्व कर दी होगी. Before signing off, I really want to thank you, sir. Thank you so much. It was really a big guidance for everyone. One thing more, don't panic. If you are suffering from it, if you are finding any symptoms like you are having black fungus or white fungus or yellow fungus, don't panic. There are treatments, there are surgeries. Just you need to keep calm, be patient, and go to your doctor. Before signing off, as I always say, please share the video.
you, because one share of yours can save many lives in this COVID situation. So stay safe, wash your hands, keep social distancing, and fight Corona. Thank you so much. We will meet us again in the next Facebook Live. Thank you.